Congress Vice President Rahul Gandhi, who has been focusing on the issue of farmers in distress since his return from the sabbatical, is on a Padyatra in the country's suicide belt, Vidarbha in Maharashtra. Now, the 15-kilometer yatra began at Gunji village in Amravati this morning. He is going to be meeting family members of farmers who have committed suicide. His yatra will cover 5 villages which have seen about 295 farmer suicides between January and April. These are live shots that we are seeing of Rahul Gandhi, the Congress Vice President. As we said, he is on a Padyatra in the suicide belt of India, Vidarbha region of Maharashtra. He is going to be meeting families of farmers who have committed suicide. But right here we're seeing live shots of people around him trying to speak to him. Rahul Gandhi, as he says that he's trying to get a first-hand assessment of what farmers are facing. Yesterday he was in Punjab. Remember, he boarded a train from New Delhi and he was in Punjab. Later he was speaking in Parliament on this issue, asking the Prime Minister to visit Punjab. अपना देश अगर बचाना है तो किसान को बचाओ। दुनिया को अगर अनाज देता है किसान तो खुद भूखा रह कर देता है। मेरे यही आपसे आप भी खेती करते हो? हाँ, मैं खुद खेती करता हूँ। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास में हम 4 भाई है, 3 भाई। हमारे पास में 80 एकड़ खेती है। हर खेत भाई के पास में 20 एकड़ खेती है। मेरी भी यही तकलीफ है। मेरे को आज 21 लाख का फसल कम हुआ है। पिछले साल 13 लाख का फसल कम हुआ है। अगर हर साल अगर ऐसा रहेगा तो एक दिन मेरे को भी वही काम आएगा, क्योंकि बाल बच्चे नहीं संभाल सकते हम। इसलिए और बिजनेस करते हो आप या बस खेती करते हो? खेती करने के बाद में और बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिजनेस देखिए, राहुल गांधी जी को पूरा अधिकार है, वो गए हैं, वो देखेंगे परिस्थिति को। उनकी अपनी पार्टी है और कोई भी नेता अगर जाना चाहे तो वो जरूर जा सकता है। किसानों की सुध लेने की उनको इच्छा हुई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वो सुध ले रहे हैं किसानों की। सवाल इतना ही है कि 15 साल उनकी सरकार यहाँ पर रही है और 15 सालों में जिस प्रकार से किसानों की हालत हुई है, इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी अगर वो जा रहे हैं तो जरूर जाए। अगर कोई अच्छी सूचना है वो करेंगे तो उनकी सूचना भी हम लोग सुनेंगे। Congress Vice President Rahul Gandhi on a Padyatra in Vidarbha. He's going to walk 15 kilometers, 5 villages, starting from Gunji to Shahpur to Ranjana, and then the last village to Tongalbad. Now, Mr. Gandhi says that this is an attempt to understand farmers' problems who've been committing suicide in this region for years. Vidarbha has seen a major agrarian crisis. Vidarbha has also seen a major chunk of those numbers of farmers who've committed suicide. Mr. Gandhi has been taking on the government in Parliament, attacking directly the Prime Minister for what he calls our anti-farmer steps, anti-farmer policies of the government. In fact, yesterday, in a speech in Parliament, Mr. Gandhi asked the Prime Minister to come and visit farmers in places like Punjab, in places like Vidarbha, where they've been committing suicide. Well, trying to blame the previous government betrays the helplessness of the present government. It's a fact that number of suicides after the new government has come into power have gone up substantially. Also, areas like Marathwada, where there had not been too many suicides, now is seeing lots of suicides. Situation is precarious. It's a fact that when rains fail, there is a huge distress. Over the last 3 years, when we had unseasonal rains, hailstorm, drought, we had supported the farmers both with agriculture investment and direct income support to the tune of 13,000 crores, and the money reached the farmers in record time. There's no point giving excuses. Unfortunately, the Modi government, and therefore also by extension Maharashtra government also, is busy signaling to the industry and business that they are pro-industry, pro-business. They are given up on farmers, or farmers are not their priority. Take the land acquisition bill amendment, for example. If they wanted to make a change, they could have come back to the opposition, to the other parties, and discussed why they suggested changes in a bill which they had supported earlier. But it was only done to signal to industry and business that
they're going to make land very cheap and they're going to be pro-business. This government has given up on increasing minimum support prices. But I think at the same time, completing irrigation projects is the top priority. This government, when they came to power, announced that they will prioritize the last mile projects, but I don't see anything happening on the ground. The government is not focused on farmers' issues. Simple. I mean, they just busy signaling to business and industry that they are a pro-industry government, that they are pro-business government, that will speed up doing business and foreign investments and foreign visits by Prime Minister. They're all focusing on NRIs and business and industry and not on farmer. I have come earlier to Vidarbha, but I've never seen a situation like this. There's a feeling of abandonment. That is the problem. The role of the government, जब किसी को दुख होता है, मुश्किल होती है, कष्ट होता है, तो सरकार का रोल उनका हाथ पकड़ने का, उनको कंफर्ट करने का होता है। 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी इशू कर्ज की है। जहां भी हम गए, किसानों ने कहा कि कर्ज माफी होनी चाहिए। यहां पे हम अभी इस घर में गए, जो भी सुसाइड कर रहे हैं कर्ज के बोझ के कारण से कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कंप्लेंट पंजाब में थी, जो कंप्लेंट बाकी देश में है कि एमएसपी नहीं मिल रही और एमएसपी को बढ़ाया नहीं गया है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बोनस की बात उठी है, पहले बोनस मिलता था, अब बोनस नहीं मिल रहा है। जनरली फीलिंग ये है कि जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सचमुच में महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में वो किसान को और मजदूर को इग्नोर कर रहे हैं और बहुत कष्ट हो रहा है लोगों को, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कृषि मंत्री ने कहा कि भाई यहां 3 सुसाइड हुई हैं। किसी और ने कहा, शायद हरियाणा में, कि ये लोग जिनसे आज मैं मिला हूं ये कायर हैं, ये कावर्ड्स हैं और इनकी सरकार मदद नहीं करेगी। मैं महाराष्ट्र के किसानों को बताना चाहता हूं कि वो होश ना हारें। हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये किसान की सरकार नहीं है, ये मजदूर की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है, ये छोटे बिजनेसमैन की सरकार नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।